अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 2 जिनाज विजन ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश ग्रेड 12 के आज हम MCQs करेंगे। नंबर 1 इज़ ड्यूरिंग हिज स्पीच मिस्टर जिन्ना dwelt ऑन द प्राइमरी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डैश असेंबली, नेशनल असेंबली, लेजिस्लेशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। द करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। नंबर 2, जिन्ना addressed the Constituent Assembly of Pakistan on 14th of August 1948, 11th of September 1947, 11th of August 1947 or 15th of August 1947। The correct option is 11th of August 1947। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट मिस्टर जिन्ना स्पोक ऑफ एन इंक्लूसिव एंड डैश गवर्नमेंट, रिलीजियस फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। तो किस तरीके की गवर्नमेंट? Communist government, impartial government, liberal government or religious government? The correct option is impartial government. Mr. Jinnah talked about dash main functions of the Constituent Assembly. 3 main functions, 4, 2 or 5. The correct option is 2 main functions. The first and onerous task of assembly is dash the future constitution, changing the future constitution, framing, protecting or enforcing. The correct option is framing the future constitution. अच्छा, the second task of assembly was to work as full and sovereign body as Federal dash of Pakistan, Federal Agency of Pakistan, Federal Bureau of Pakistan, Federal Legislature of Pakistan or Federal Department. The correct option is Federal Legislature. Qaid-e-Azam declared the partition of subcontinent as dash revolution, cyclonic, ordinary, marvelous or massive. The correct option is cyclonic revolution. Mr. Jinnah proposed to adopt dash constitution for Federal Legislature, previous constitution, old constitution, provisional constitution or preliminary. The correct option is provisional constitution. One of the biggest curses from which India is suffering is bribery and nepotism, corruption, poverty or unemployment. The correct option according to the speech is corruption. Along with many other things has arrived the evil of nepotism and robbery, jobbery, lawlessness or dictatorship. According to book, the correct option is jobbery. Mr. Jinnah made it clear that he will not tolerate any kind of jobbery, dash or any influence brought upon him. जॉबरी के बाद फेवर, नेपोटिज्म, ब्राइबरी और करप्शन. अकॉर्डिंग टू बुक द करेक्ट ऑप्शन इज नेपोटिज्म. अकॉर्डिंग टू मिस्टर जिन्ना द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इंडिया वुड हैव ब्रॉट पीस, टेरिफिक डिजास्टर, प्रॉस्पेरिटी और रेस्टलेसनेस. द करेक्ट ऑप्शन इज टेरिफिक डिजास्टर. अच्छा, इफ़ यू विल वर्क इन कॉपरेशन फॉर गेटिंग द पास्ट, burying the dash, you are bound to succeed. Burying the congregation, status, hatchet or dead bodies. The correct option is hatchet. अच्छा, बरी द हैचेट का मतलब होता है झगड़ा बुला देना. यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड दैट हैज़ नथिंग टू डू विद बिजनेस ऑफ स्टेट, मैसेज, गवर्नमेंट और स्टेट. द करेक्ट ऑप्शन इज according to book, the correct option is business of state. Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in religious but dash sense, monetary sense, ideological sense, political sense or real sense. The correct option is political sense. Mr. Jinnah said that his guiding principle will be justice and complete faithfulness, impartiality, power or strictness. The correct option is impartiality. अच्छा, the synonym for angularity is commutation, discrepancy, transparency or angles. The correct option is discrepancy. अच्छा, उसके बाद the synonym for cyclonic is horrible, remarkable, achievable or revolving. The correct option is remarkable. अच्छा, the synonym for onerous is powerful, demanding, partial or strange. The correct option is demanding. The synonym for in vogue is in market, in practice, in agreement or in danger. The correct option is in practice. तो आज हमने यूनिट नंबर 2 के MCQs किए. अगर आपको पूरी बुक की वर्कशीट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आप मुझसे रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर स्टडी ग्रुप में और आप तमाम टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो हासिल कर सकते हैं. तो नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के MCQs. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.